हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। सो मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं 19 स्टिच। 19 स्टिच हमारे होने जा रही है सीड स्टिच। सो मार्किंग्स कर लेते हैं एक बार। सीड स्टिच के लिए हम लोग एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स, और उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे सीड की तरीके। सो एक बार मार्किंग्स कर लेते हैं। एनी शेप यू वांट, आप सर्कल भी कर सकते हो, स्क्वायर भी कर सकते हो, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इट्स टोटली अप टू यू गाइस। आप कौन सी शेप में इस स्टिच को फिलिंग कर रहे हो। सो ये भी एक फिलिंग का ही वर्क है हमारा, जैसे हमने इससे पहले सीखी है फिश बोन स्टिच। हम सीड स्टिच कर रहे हैं और उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। सो अब क्या करेंगे, थ्रेड, नीडल में थ्रेड हमने डाल लिया, एंड नॉट लगा लिया है। So seed stitch is a simple, versatile and textured stitch. Commonly used in hand embroidery, it's typically used to create a subtle dotted or pebble effect, and it's great for filling areas with a soft, natural texture. It can be used to add shading texture or to fill small space in a design. So यहाँ पे हम लोग small straight stitch कर रहे हैं। ये सीजर से फैब्रिक कट हो गया था, इसको इग्नोर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमें स्मॉल स्ट्रेट स्टिच करके इस पूरे गैप को फिल करेंगे। सो अब ध्यान से देखना, किसी भी साइड पे, किसी भी शेप, मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप ये स्टिच को कर सकते हो। ये सिर्फ हम फिलिंग का वर्क कर रहे हैं। ये फिलिंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी स्टिच। आपकी कोई भी रैंडम एरिया बच गया हो तो वहाँ पे आप सीड स्टिच कर सकते हो।
सो गाइस, फ्रंट से हमारी सीट स्टिच कंप्लीट हो गई है। कुछ पर्टिकुलर स्पेस या फिर गैप को हम फिल करने के लिए सीट स्टिच का यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टिच में आप टाइनी टाइनी स्टिच भी बना सकते हो और थोड़ी सी लार्जर भी कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल ही ज़्यादा मत कर देना, 0.5 mm तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सो कुछ इस तरीके से फिलिंग का वर्क करा है हमने इस एरिया में, इसको रेक्टेंगल शेप में। आप चाहो तो सर्कल में ट्राई कर सकते हो और भी अदर शेप्स में ट्राई कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। हम लोगों ने फ्रंट से तो देख लिया अपना डिज़ाइन, अब बैक से देखते हैं। सो बैक से भी हमने फिलिंग का वर्क किया है, तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे एंड नॉट और अपने थ्रेड को सिक्योर करेंगे। अब इसको हम लोग कट कर देंगे एक्स्ट्रा थ्रेड को। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। आज हमने न्यू स्टिच सीखी है, सीट स्टिच। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Take care and bye, or try to practice all the stitches.